Okay, students, now, after that, एक चीज ध्यान में रखिएगा. Do you know what is a three-sided figure called? What is this? Triangle. लिखा हुआ सामने आ गया. It is triangle, right? What is this? Rectangle. Okay, it is a rectangle. Is it a rectangle? No. Square, right? Okay. With a square, we have another shape. What is this? What is this? Rhombus. Rhombus, right? What is this? What is this? Rectangle. Oh. What is this? Parallelogram, right? So, what we have in square, all the sides are equal. What we have in rhombus, all the sides are equal. What we have in rectangle, opposite sides are equal. And what we have in parallelogram, opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are parallel in all the shapes, right? But एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉ करता हूं, another line is here. ये जो दो ग्रीन लाइंस ड्रॉ की गई हैं, इनको क्या कहा जाता है? डायगोनल. ठीक है. These are called diagonals. और ध्यान में रखिएगा, for all the four diagrams, midpoint of diagonal का जो midpoint है वो सेम होगा. Diagonal का जो midpoint है वो सेम होगा, means here it is A, here it is B, here it is C, here it is D. अगर मैं AC का midpoint कैलकुलेट करूं या BD का midpoint कैलकुलेट करूं, सेम रिजल्ट आए. डायगोनल का midpoint सेम होता है, चाहे आप लेफ्ट साइड से ड्रॉ करें, चाहे आप राइट साइड से ड्रॉ करें. ओके, ये चीज हमारे ध्यान में होनी चाहिए. एंड दिस प्रॉपर्टी इज फॉर ऑल द फोर क्वाड्रिलेटरल्स जो यहाँ पर बने हुए. सही हो गया ना? A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. All the four quadrilaterals are here. Four-sided diagrams there. That's why called quadrilateral. इन चारों डायग्राम में क्या मिस्टेक है किसी एक में? क्या हुआ? DC की जगह वो CD है. तो क्या हो गया? ABCD. इस वजह से odd man out, not odd man out. Mistake. What is the mistake? ये कुछ अलग सी डायग्राम लग रही है, बाकी सब में साइक्लिक लिखा हुआ है. बाकी सब में मैंने साइक्लिक लिखा हुआ है. तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी क्वाड्रिलेटरल आप लोग बनाएं, ABCD का साइक्लिक होना जरूरी है. चाहे तो क्लॉकवाइज हो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो,
लेकिन साइक्लिक होना जरूरी है। बट इन द थर्ड डायग्राम हमने क्या किया, zigzag लिख दिया। इट इज रॉन्ग, राइट, ये गलत लिखा। तो हमें इसको सही करना होगा और इसको साइक्लिक लिखना होगा। साइक्लिक लिखते हैं जरा। कैन आई राइट इट बाई ए बी सी डी? इज दिस ओके? यस इट इज ओके। साइक्लिक चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, इट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर zigzag फॉर्मेट में लिख दिया आपने तो वो गलत हो जाएगा, रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। समझ में आ रही है चीज? नाउ फॉर एग्जाम्पल in the diagram 2 we have a coordinate 1 3, B has 4 minus 2, C has minus 2 and 5. Find out the coordinates of D. Let's say A and B. Find out the coordinates of D. How can we calculate the coordinates of D? That's great. That's great. Now, अब मैं करूँ, ठीक है? अब आप देखिए, how can we calculate the coordinates of D? As we know that for this diagonal, midpoint will remain same. First, I am calculating the midpoint by the help of AC. By the help of AC. अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, midpoint by the help of AC. Midpoint by the help of AC. और फॉर्मूला क्या है? x1 plus x2 by 2 for x, y1 plus y2 by 2 for y. x1, what is x1? 1. What is x2? 1 minus 2 minus 1 divided by 2. Minus 1 divided by 2 is the x coordinate of the midpoint. Any confusion? Sir, any confusion? No, sir. No. And y1 3 plus y2 कितना हो गया? 8. 8 divided by 2 is 4. This is mid coordinate of y, right? Any confusion? Directly हमने midpoint calculate कर लिया. Now we have to calculate the coordinates of D. It is same question as we done earlier. Like D is here with coordinates A and B. B is here with coordinates 4 and minus 2. Midpoint is here with coordinate minus half and 4. So x, sorry, what is x? X is minus half. X equals to x1 is A. आवाज आए बच्चों सबकी? x2 is 4 divided by 2. 2 and 2 cancel out. A equals to minus 1 minus 4 minus 5. What is y? Coordinates of midpoint 4 equals to, what is y1? What is y2? माइनस 2 है तो फिर प्लस से क्या हो गया, ये माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय 2. 4 2 जा 8. 8 plus 2 is 10. मिड पॉइंट के बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -5, 10. Any confusion? Any confusion? And there is no need to copy this example. There is no need to copy this example. After that,
After that, students, you guys have to do some questions. कौन से questions जनाब? Question number 3. Question number 3. Question number 6. And question number 9. And question number 9. Start working. Okay, after the midpoint, the next subtopic of your coordinate geometry is gradient. Is gradient. Now, gradient को जनाब एक और नाम है gradient का, that is called slope. प्यार से gradient को घर में slope बोलते हैं. आपको क्या बोलते हैं घर में प्यार से? तो प्यार ही नहीं करता. ठीक, फिर से ना. तो gradient को slope बोला जाता है घर पर. सही. अब जनाब represented by small m. Again, we have a formula for finding out the gradient. What is a gradient? It is formula. What is a gradient? Gradient is slope. That's great. And what is slope? Gradient. Excellent. But what is gradient or slope? Good answer. नहीं मालूम? माशाल्लाह, सब लोग ओ लेवल्स ए स्टार स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सब लोग ओ लेवल्स के. So gradient is basically or slope is the ratio between y step and x step. जितना लाइन ने y में ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय जितना लाइन ने x में ट्रेवल किया, रेशियो बिटवीन y step and x step is called gradient, or ratio between rise over run is called gradient because y step को rise कहा जाता है, ऊपर जाना, x step को run कहा जाता है, मूव करना horizontally. So again we have proof that how can we get the formula of gradient, but I'm not doing that here, right? I'm not doing that here. I'm just writing the formula. So it is basically rise over run. Rise will be calculated by y2 minus y1, and run will be calculated by x2 minus x1. This is the formula for finding out the gradient or slope of any line. ठीक हो गया जनाब? Now, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि we have for example
A line is here. For example, a line is here. A line parallel to x axis है. एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है. इनके ग्रेडियंट्स निकालने की जरूरत नहीं होती हमें फॉर्मूला के थ्रू. इनके ग्रेडियंट्स हमारे जहन में होने चाहिए. अगर हम ग्रेडियंट्स निकालेंगे भी तो भी वही ग्रेडियंट आएगा जो कि हमारे जहन में मौजूद है. ठीक है, तो याद रखिएगा, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस then the gradient of this line is always equals to 0. And if a line is parallel to y-axis, then the gradient of this line is always equals to infinite, which is represented by 1 upon 0. Anything divided by 0 is equals to infinite. अगर क्वेश्चन में हो what is the gradient of a line parallel to y-axis, आपने डायरेक्ट लिख देना है infinite. और अगर सॉल्व करने के लिए आ जाए तो सॉल्व करने के लिए इनफिनाइट को 1 upon 0 की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है. राइट, सो 1 upon 0 इज ऑलवेज कॉल्ड इनफाइनाइट. एनी कंफ्यूजन आफ्टर दैट? ये तो दो बातें होंगी. नेक्स्ट, parallel lines. If the two lines are parallel, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो याद रखिएगा, if this has gradient m1, this has gradient m2, तो हम कह सकते हैं m1 is equals to m2. पैरेलल लाइंस में ग्रेडियंट क्या होता है? इक्वल होता है, सेम होता है. ठीक हो गया. और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर लाइंस. पैरेलल का साइन क्या है? दिस वन. परपेंडिकुलर का साइन क्या है? दिस वन. इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्रीज बन जाए अगर इनके दरमियान. दिस लाइन हैज ग्रेडियंट m1, दिस लाइन हैज ग्रेडियंट m2. तो याद रखिएगा, m1 m2 का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है. अगर दोनों ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर क्या आएगा? -1. और हम इसको क्या कहते हैं? द ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. द ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. राइट, क्या मतलब, क्या कहा ये? फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका ग्रेडियंट 7/2 है तो इसका ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा. साइन चेंज करो, उल्टा कर दो, तो वो ग्रेडियंट आ जाएगा दूसरी लाइन का. ठीक हो गया. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका ग्रेडियंट -5/3 है तो इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 3/5. साइन चेंज करो और इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो ग्रेडियंट आ जाएगा परपेंडिकुलर लाइन का. ठीक हो गया जनाब. ये कॉपी कीजिए, फिर आगे चलते हैं. Friends, after that, some questions according to the what gradient. Like question number 2 is here. In question number 2, आपसे क्या कहा गया? In question number 2 आपसे क्या कहा गया जनाब? Given that the points are A, B, C, D, prove that AB is parallel to DC. कैसे होगा? First calculate the gradient of AB.
then calculate the gradient of BC. If the both are same, it means they are parallel. First calculate the gradient of AC in part B, then the gradient of BD in part B. If they are negative reciprocal of each other, then they are perpendicular. एक पार्ट जरा मैं इसका सॉल्व कर दूं, फिर आप लोग स्टार्ट कीजिएगा. Now I'm doing part B. अब आप देखिएगा, stop working, look at the board. First we are calculating the distance, gradient AC. Gradient AC. बस सिर्फ मैं इस वजह से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लिखना आ जाए कि हाउ टू राइट, किस तरीके से एक्सप्रेस करना है आपने यहाँ पर अपने सॉल्यूशन को. ठीक है. नाउ gradient AC is AC. A is here, C is here. Y2 minus Y1, 2 minus 3 divided by X2 minus X1, 7 minus 2. 2 minus 3 is minus 1, 7 minus 2 is 5. Gradient BD. B and D. So 0 minus 5 divided by 4 minus 5. It will be minus 5 upon minus 1. Minus minus cancel out. It is equal to 5. अब आप देखिए, क्या मैं कह सकता हूं gradient AC multiply by gradient BD is equal to minus 1. How it is? Minus 1 upon 5 into 5 equals to minus 1. Cancellation के बाद minus 1 equals to minus 1. Proof. Cancel हुआ 5 and 5. Minus 1 equals to minus 1. Proof हो गया. They are perpendicular. They are perpendicular. और एक चीज सुनिएगा, अगर मैं यहां लिख दूं तो भी कोई मसला नहीं. इट्स नॉट नेसेसरी टू शो कि यार दोनों एक दूसरे के नेगेटिव क्या रेसिप्रोकल हैं. बस हमें सामने नजर आ गया, एक माइनस 1 अपॉन 5 है और दूसरा 5 है. दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल. ओके. 2. आफ्टर that question number 4. In this question क्या कहा गया जनाब? In question number 4, a triangle has vertices this. Find the gradient of the straight line this. Prove that the triangle is right angle triangle. We have to prove that the triangle is right angle triangle. कैसे प्रूफ किया जाएगा जनाब? फॉर एग्जाम्पल, a triangle is here with A, B and C. A has coordinate 3 minus 2, B has coordinate 2n minus 14, C has coordinate minus 2n minus 4. आपने कैलकुलेट करना है ग्रेडियंट ए बी. फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट ए बी आ गया 7. आपने कैलकुलेट करना है ग्रेडियंट ए सी. फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट ए सी आ गया 3. आपने कैलकुलेट करना है ग्रेडियंट बी सी. फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट आ गया माइनस 1 अपॉन 7. अब आप देखिए, आप लिख सकते हैं ग्रेडियंट ए बी, या आप क्या लिख सकते हैं जनाब? ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बिकॉज इन दोनों का ग्रेडियंट आपस में क्या हो गया? नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया. तो hence prove that the triangle is right angle triangle, because in right angle triangle कोई सी दो साइड आपस में 90 डिग्रीज बनाती.
कोई सी दो साइड परपेंडिकुलर हो, तीनों ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया आपने, कोई से दो ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे, प्रूव हो जाएगा ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. क्लियर? Yes. What are the right gradients? What is the gradient of AB? 12 is the gradient of AB. What is the gradient of AC? 2 upon -5. What is the gradient of AC? 2 upon 5. Minus 2 upon 5. Okay, minus 2 upon 5. And what is the gradient of BC? 5 upon 2. The gradient of AC. I am calculating the gradient of AC. Y2 minus y1 over x2 minus x1. So it will be minus 2 over minus 5. So the result is 2 upon 5. Beta, this is the gradient of AC. This is the gradient of AC.